Assalamu alaikum, everyone. Electrostatics is better than static electricity. Ah. So, statics. All right. Yesterday we were discussing that there are charges, and those charges, they cause a body to become charged body, right? ऐसे ही है? Okay. Sure. थोड़ा सा quick revise कर लो. I'm going straight away with the questions. हाँ. Ready? All right. Let's suppose we have a glass there, which is mounted on a wooden stand. This neutral, right? What do you mean by neutral? No charge. No charge? Equal of it. All right. No net charge. अब ठीक है? This net means it has equal, neutral means equal positive and negative charge. Therefore, no net charge. Right? Because we know that atom as a whole is neutral. It has got equal positive and negative charges on it. Right? Now, considering the atoms, this is a glass affair. It will have equal positive and negative charge, so it is neutral. Right? Now, I have to make it charged. Charge means either it can be positive or negative. ये मतलब है ना इसका, कुछ और तो नहीं इसके अलावा हो सकता है. How can I make it charged? So, positive charge is due to which particle? Protons. And negative charge is due to ऐसे ही है ना बेटा? Positive due to protons. I want to make it charged. Let's suppose I want to make it negatively charged. What should I do? Okay. उससे क्या होएगा? Negatively charged or पास लेके आएंगे तो क्या होएगा? So positive or negative, positive, negative. All right. ठीक हो गया. तो चलिए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो फिर क्या होगा इससे? क्या चीज एक्सेस होती है? ज्यादा कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स. और अगर मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, गर्ल्स दिस टाइम इट्स योर टर्न, तो मैं क्या करूं? आई वांट टू मेक दिस ग्लास affair positively charged. What should I do? I need to bring a positively charged one and touch it and it will become positively charged. So that means I'm transferring protons to it.
This time I have to make it positively charged. देख रहा हूं इधर positive करने के लिए. What should I do? People online need your help. How I can turn it positively charged? तुम लोग जरा खामोशी इख्तियार करो. Your discussion is loud. I don't want that at this moment. Okay? Yes, Heather, you can also join this team and online team also. Question with you, except these three. Yeah. How can I turn this glass affair into positively charged object? Fatma, Bakhtiar, Hadia, Umar, Usman, and Khadija. All right. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज डॉट ले आए हम, टच कर दिया इधर और ये पॉजिटिवली था तो सारा पॉजिटिव क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया. ठीक है ना घर हैदर का ये आंसर है. डू यू एग्री विद इट? तो तुम लोगों से वो पूछ, खामोश बैठो जी. तुम लोग नेगेटिव बता चुके हो ना, अब चेक करो कि इधर से क्या रिस्पॉन्स है. जी बेटा सादिया, क्लास फिर सब टच हो गया. लुक इट, फिर डिस्कशन हो रही है. नहीं ये एक ही, आज मेरे पास एक ही क्लास है. हिबा, पर हिबा शी सेइंग प्रोटॉन मूव भी नहीं करते. लो नवी का यस. ओके देन हाउ कैन आई मेक इट पॉजिटिवली चार्ज? वो तो हैदर तो कह रहा था सर पॉजिटिव चार्ज में रॉड वो आराम से टच करे पॉजिटिव इस पे ट्रांसफर हो जाएगा. तुम्हारा फिनोमेना रॉन्ग हो गया बेटा सारा. हिबा कम ऑन, बताओ शाबाश. यू आर राइट, गो अहेड. नहीं बनाना तो है ना पॉजिटिव देखना. ठीक है, ऑनलाइन पीपल आई एम श्योर आप लोगों को सिग्नल्स नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो मेरी आवाज ही नहीं आ रही है ना. कोई बात नहीं बेटा, पकड़े जाओ. ओके आई एम जस्ट होल्डिंग यू पीपल हियर. मुझे पता था ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है. आ जाओ, इसको हम वे जस्ट फ्रीजिंग इट एट दिस मोमेंट. ठीक है, अरूबा मुझे बताएं केमिस्ट्री में if I have a hydrogen molecule, sorry, water molecule, sorry, hydrogen, water molecule, H, O, H. यानी H2O इसी तरह से लिखा जाएगा. क्या हुआ कि इनमें कुछ गड़बड़ हुई, ये वाला H तरह से इधर हो गया और इस पे कुछ चार्ज आ गया. चार्ज कौन सा चार्ज हो जाएगा? और इसके ऊपर पक्का यस. पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? इस पूरे को ये प्रोटॉन है, क्या कहेंगे? आयन. शाबाश, ये दोनों क्या है? आयन्स. ये कौन सा आयन है? इसका नाम है बेटा, इतनी केमिस्ट्री मुझे आती है. हाइड्रोजन आयन. एनी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का एक स्पेशल नाम है केटायन. शाबाश. और इसको क्या कहेंगे? शुक्र है. तो केटायन एनायन ऐसे ही. अच्छा ये H पॉजिटिव क्यों हो गए? उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इस पे क्या क्रिएट हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. पीपल ऑनलाइन हेल्प मी. दिस cation H positive, why it turned positive? It has loosened its electron. Thank you very much. I was just checking कि signals आ रहे हैं. खास क्यों ना बेटा, जवाब भी दिया करो साथ साथ. Yes, excellent. It has lost its electron. वो किधर गया इलेक्ट्रॉन? किधर चला गया? That's why it has turned into the negative ion, anion, right? It means only electrons, they can be moved.
Okay? So if I have to make this object negatively charged, I need to supply it what? Electrons, right? And if I have to make it positively charged, I need to take away its electrons. Protons move हो सकते हैं नहीं हो सकते तो वो are responsible for movement only electrons. You see, ये neutral object है. If you will give it electrons, it will turn into negative object. And if you will take its electrons away, जैसे you did with this hydrogen बेचारा, ठीक है? You took away its electron. In the same way, if you just take away of the electrons of this glass affair, this will turn into positively charged object. All right? Because protons cannot move. Why? Aruba? Why protons cannot move? इधर हो ना पूरे शहर में सैर कर रही हूँ क्लास में नहीं इधर ध्यान प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं Can anybody go into the nucleus? No, sir. To take the proton out of it? No. It is not easier. Can we break the nucleus? Can we? Not in ordinary conditions. Atomic reactor में कहीं पे होता है यहाँ पे नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन से गुजारा करते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देंगे नेगेटिव हो गया उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए क्या हो गया वो deficiency of electron will cause positive charge. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ आ रही all right शाबाश so this concept is very important that only electrons they are movable they can be transferred to a body and they cannot be taken out from that body बस electrons समझ आ रहा है Okay, let's come back to the topic. Yesterday we just discussed the things. हमने कोई खास चीज ऐसा नहीं की थी सिर्फ समझाया था मैंने आपको आज हम थोड़ा सा फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे चार्जिंग हाउ वी कैन चार्ज neutral object. How can we charge a neutral object? There are two methods. Method number one. And then we have method number two. Method number one. Again, we got the same glass affair. It is a neutral glass sphere. We have a negatively charged rod and we are touching that rod with this affair. What do you expect? What will happen? Transfer of electrons from rod to electrons will transfer to the sphere. And sphere will turn sharp. It will turn negatively charged. This method is called charging by touch method.
we have touched the rod to this surface. Aruba, in touch method, which charge is created on the neutral object? Same or opposite? Yes. So this is very important and it should be noted down that same charge is created. All right. बेटा यहां तक समझ आ रहा है टच मेथड समझ में आया है कोई क्वेश्चन या आंसर पेपर ऑनलाइन ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको हम टच कर रहे हैं न्यूट्रल को चार्ज किया जाता है जो पहली चार्ज है हमारे all right method 2 again we have a surveyor mounted on the glass. Again, we are bringing in a negatively charged rod. Are we touching it? No, we are not touching it. Yes. We are just bringing this rod closer to it. And as a result of that, we'll have a separation of charges. The influence of these negative charges, they will cause a separation of charges on the surface. These negative charges, they will attract all the positive. They will appear on this side, closer to it. ऐसे ही है ना? And this negative charge is going to repel similar negative charges. They will try to escape from this sphere. They will try to move away as far as they can. People, my question is, what if I just bring this charge rod over here? Same rod, I just brought it here. What is going to happen to this sphere? Negative पास आ जाएंगे positive plus इसके पास है तो positive will remain closer to it किधर आ जाएंगे positive इधर ऐसे ही है और ये नेगेटिव किधर आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर बेटा समझ में आ रहा है और सो यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है Aruba, similar charge or opposite charge this time in this region? Opposite charge. This method is called charging by induction. और इसमें क्या होता है ऑपोजिट चार्ज इज क्रिएट मुश्किल है बेटा ये दो मैथड्स तो बस इतनी सी बात अगर ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ अगर ये नहीं समझ आ रहे तो अभी पूछो यस आई कैन हेल्प यू सर जो टच मेथड है उसमें जो सेम ये और जो वो इंडक्शन है उसमें जो है ऑपोजिट ठीक है ना पक्का ये सबको
एकदम क्वेश्चन पूछ लूं, देख लो बेटा, अगर कोई चीज पूछनी है तो अभी टाइम है, बाद में नहीं कहना सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल किया। अगर क्लास या मेटल अभी जरा रहने दे, ग्लास पक्का हो जाने दे, फिर मेटल ले आएंगे। ऑल राइट पीपल, इफ यू आर नॉट आस्किंग मी क्वेश्चन, I'll ask you a question. Let's suppose we got a sphere mounted on a wooden stand, and I just touch it with rod, which is positively charged. अब नहीं गड़बड़ कर दिया, टेक्निकली मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या होएगा। तुम तीनों नहीं, तुम लोग क्या होगा, क्या चार्ज इस पे क्रिएट होएगा ऑन द स्फीयर, यस और नो, व्हेन दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड विल टच द स्फीयर, ये है the, कुछ होगा इस स्फीयर को, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना शुरू होंगे तो इस तरह क्या चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्सेलेंट, इंप्रेसिव। और यहां पे पॉजिटिव कम हो जाए, ठीक है ना, इधर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी दोनों, ठीक है। ये कहना चाह रहे थे आप लोग या कुछ और है, ठीक है, ओके कि नहीं है, ओके अभी डाइजेस्ट कर रहे हैं सर, कर लो शाबाश, टेक योर टाइम, मत तंग करो भाई, पॉजिटिव टच किया तो फिर भी पॉजिटिव, उस पर भी पॉजिटिव, इसके पहले बेचारे पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जहां से और इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, थोड़ा इस तरह से हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। जी बेटा आज फिर इधर, मैं तो नहीं चाह रहा था कि ये सवाल करो, इधर खुद ही सवाल। ओके, इन दिस केस लेट्स सपोज अगेन वी हैव दिस this is a positively charged rod, yes, which is not touching but it is brought closer to this sphere. What is going to happen here, this positive will attract which charge, negative, and it will repel, तो वो किधर क्रिएट होएगा, ठीक है बेटा, गुड, समझ में आ रही है चीज, बस ये इतना, यही मुश्किल कॉन्सेप्ट, अगर ये आगे तो इसके आगे एप्लीकेशन है, जितना वी आर गोइंग टू अप्लाई उतने इजी और इंटरेस्टिंग होता है, दिस वाज द क्रक्स ऑफ कोर थिंग, ओके, चलो नोट कर लो बेटा इसको, आई एम गोइंग टू रब इट, नहीं अभी इसकी एप्लीकेशंस करनी है, electroscope, familiar name, microscope, telescope, now we have electroscope. What do you think, where do we use it, electro, scope का क्या मतलब है, microscope, scope, to see the thing, right? Micro means that instrument enables us to see the micro things. Electroscope, it is that device which is going to help us to see electric thing, the charges you can see. Actually, those electrons and the charged particles, they are so small that we cannot see them. So this electroscope is not actually showing us the
particles. Rather, it is going to show us the behavior of the charged objects, how they behave when they are charged. All right. So, I mean, all of the clear हो जाएगी चीजें when we are going to look at the details. Don't you worry. Electroscope is a device which is very simple and you can make it at home even. A copper disc. Copper disc means जैसे वो 10 rupees का coin नहीं होता वैसे disc किस चीज की है copper. Copper rod, copper plate. ठीक है ये सारा metal copper का and we are using copper because it is a very good conductor. ठीक है and with this copper plate we have gold leaf. Gold leaf. या किसी को पता है गोल्ड लीफ क्या होता है क्या होता है गोल्ड लीफ थैंक यू वेरी मच सिल्वर लीफ देखा किसी ने या सिल्वर लीफ उर्दू में इसको कहते हैं चांदी के वर्क जैसे वो मिठाई वाली जो स्वीट स्टॉप होती है उसके ऊपर लगाए होते हैं ना दैट इज द सिल्वर लीफ. So gold leaf कैसा होएगा you can imagine. So why we are using gold leaf? It is very delicate. It can even move with the slightest blow of air. So we are using that gold leaf. And gold is the best conductor. Remember, the best. Either तो gold की whites पे ही बना दो. चोरी हो जाएगी छोड़ेगी कोई. Yes, very expensive. Good. So this red thing is the gold leaf attached with one end of this plate. The other end of the gold leaf is free to move. ये यहाँ पर tied up है, but the other end, this end is free to move. ठीक है? Lazy. I just touched a negatively charged rod to it. Yeah, touched. What will happen to these charges? Negatively charged electron. What's going to happen? GLE. यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे टच किया हमने सेम चार्ज शाबाश डिस्क पे नेगेटिव आ गए इट इज मेड अप ऑफ कॉपर तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे दे विल रिमेन इन द डिस्क आगे किधर रॉड में भी नेगेटिव बस यहां पर रुक जाएंगे रॉड में रुको नहीं प्लेट किस चीज की है कॉपर या कॉपर योर प्लेट इज मेड अप ऑफ कॉपर उसके साथ लीफ अटैच है ऐसे करके ये प्लेट है और उसके साथ ये लीफ है यू करके कनेक्टेड है ये इट इज लाइक मूवेबल पार्ट ऐसे बेटा उसको वेल्ड करते हैं बहुत डेलिकेटली वेल्डिंग करते हैं जैसे गोल्ड ज्वेलरी को करते हैं ना वैसे वेल्ड करते हैं सिर्फ टॉप साइड तो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के भी आ गया since this gold leaf is connected attached with the plate इस पे भी आएगा कुछ चार्ज gold is also best conductor इस पे भी आ गया चार्ज नेगेटिव 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 क्या करेंगे तो ये लीफ ऐसे ही रहेगा या ये डिफ्लेक्शन यस इट विल डिफ्लेक्ट इस तरह की ये शो करेगा शो किया ना इसमें डिफ्लेक्शन शो की दैट्स व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्कोप दिस इज इलेक्ट्रोस्कोप deflection. This deflection is due to repulsion.
क्योंकि दोनों पे सिमिलर चार्जेस है तो रिपेल हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना? अब दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज वेरी डेलिकेट, यहाँ पे गोल्ड लीफ वगैरह, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ग्लास केसिंग में डाल देते हैं। आपने लैब में फनल देखी है ना, उस फनल, हाँ ग्लास फनल, उसमें डाल दिया हमने ग्लास की फनल। अच्छा जी, ग्लास में क्यों हमने इसको डाल दिया, लोहे की फनल में क्यों नहीं डाल दिया? बेटा ट्रांसपेरेंट है, नजर तो आए इधर से हमें कुछ। अगर हम इसको मैग्नेटिक वस्तु में डालें, रिफ्लेक्शन किसी को नजर आएगी? ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे एक रबर का बैंड लगा, रबर बैंड बंद कर दिया यहाँ से, यहाँ से, so no air can disturb the deflection of the leaf. This is the construction and working of an electroscope. मुश्किल है बेटा, समझ आ रही है रुपा इसकी? भाई कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लो। Bhaktiyar, my question with you, what will happen if I just bring in a highly charged negative rod? Previously it was negatively charged, now it is highly negatively charged. What influence or response this electroscope will show? बख्तियार, फातिमा, हादिया, उस्मान एंड खदीजा, पहले थोड़ी कम चार्ज नॉर्मल चार्ज रॉड थी, इस वक्त में हैवी चार्ज है, हैवीली चार्ज नेगेटिव रॉड है, तो क्या इसका इफेक्ट आएगा ऑन दिस इलेक्ट्रोस्कोप? High deflection. एक्सेलेंट फातिमा, वाइड डिफ्लेक्शन, ये लीफ यहां से और ज्यादा दूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, शाबाश, वाइड डिफ्लेक्शन. So the deflection of the leaf will show us the intensity of the charge. Less deflection, less charge. More deflection, wider deflection, more charge. ठीक है? Less charge, less deflection. Heavily charged, more deflection. Okay? So all the time we cannot make this electroscope. So symbolically we can make it like this. इसका सिंबल ये है, ये जो साथ में मैंने बनाया, दिस इज गोल्ड, ये वाला. ओके, चलो इसको मैं रेड से बना देता हूं सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. ओके, ये आपका सिंबल फॉर इलेक्ट्रोस्कोप, राइट? माय क्वेश्चन इज, इन दिस सिनेरियो, व्हाट इफ आई जस्ट ब्रिंग in a positively charged rod, which is not touching the electroscope, the disc of the electroscope. You expect that this leaf will show any deflection? It is brought closer to the disc. Will this leaf deflect? Yes or no? Ali? टच नहीं किया, पास लाए, ऐसे करके पास. मुझे ये बताओ, ये लीफ डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? सोच के बताओ, यस और नो. हाँ ना करेगा. मैं लिखता जाऊँ इधर, जो बच्चे कह रहे हैं ना यस, उनके नाम में लिख दूंगा. कौन कौन कह रहे हैं? नहीं सर, अली कह रहे हैं नो, मैं वो भी नहीं कह रहा, मैं थिंकिंग प्रोसेस. अभी सोच.
जी पीपल ऑनलाइन व्हाट डू यू से यस और नो रिफ्लेक्शन होएगी यहाँ पे कि नहीं होएगी No. नो राइट शाबाश एक बच्चे ने कहा नो दो बच्चों ने अभी तक यस कहा है बाकी सब सोच रहे हैं हैदर ने भी यस कहा यस शाबाश उस्मान ने भी कह दिया यस बख्तियार योर टर्न बख्तियार का आज माइक खराब है ओके काफी सोच लिया तुम लोगों ने कोई कहा भी नहीं जवाब दे दें या जवाब ही दे दें हमें सर मैं तो हाँ जी होगा होगा चलिए अभी ने सोच लिया होगा 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 बाकी सबने भी कह दिए होगा सिर्फ फातिमा ने कहा था नो जी फातिमा व्हाई डू यू थिंक सो नो दैट वाज फातिमा Because in this the electrons will travel to the rod and that will cause the leaf to move towards the copper plate. so no deflection will take place No. all right one way of thinking शाबाश बेटा at least आपने शेयर किया अली आप बताओ you said yes why yes नेगेटिव किधर जाएंगे किधर पास दिस के ऊपर इधर नेगेटिव आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव इसी में आएंगे ओनली इन द प्लेट और इन द लीफ ऑल्सो जब लीफ में भी आएंगे तो फिर सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेयर तो डिफ्लेक्शन होगी कैसी स्ट्रॉन्ग और वीक वीक होगी इतनी सी हो हाँ इतनी सी हो लेकिन होगी सही ठीक है अली अगेन माय क्वेश्चन इज बेटा अगर यहाँ पे हम और पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे क्रिएट कर दें किसी वजह से तो फिर क्या होगा सर एक बार कॉन्सेप्ट ये वो तो जाएगा तो फिर क्या होगा लीफ पे फर्क पड़ेगा वो ये तुम्हारे जो मुनकर नकीर है ना चुप रहो तुम दोनों को ना बताओ हाँ सर वो तो होगी रिफ्लेक्शन तो उतनी होगी या ज्यादा होगी या कम होगी अब कोई हेल्प करेगा अली को सोचने में मेरे पास तो है एक इंस्ट्रूमेंट वो बड़ी जल्दी सोच कुछ आता है यस यस पीपल जी हादिया आप बताओ बेटा if we just increase the intensity of this negative तो उसमें इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हमने किया और इंक्रीज so due to induction more negative will come here and as a result more positive will go down which will cause more deflection all right yes so we will have more deflection because we'll have more charge more positive charge over here and more negative charge over here. Since this thing is not touching it, so we will have a separation of charges. Opposite charges will be attracted and they will go closer to this rod. Although they cannot jump, so they will remain here. And positive will come down. And as a result, we'll have a more larger deflection. समझ आ रहा है बेटा? हेलो अच्छा आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड समझ में आया था अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा और सिमिलर चार्ज किधर चला जाएगा नीचे अब दोनों पे सिमिलर चार्ज विल ट्रैक्ट और रिपेल और उससे डिफ्लेक्शन होगी गोल्डी ऐसे डिफ्लेक्ट होगी because this is the movable part this red thing is similar charge है ना दोनों पे क्योंकि कनेक्टेड है दोनों ठीक है बेटा तो ये एंड हमने इसलिए रखा हो कि ये मूवेबल है ऑलराइट so leaf will deflect more okay अच्छा जी हम लोग क्या ऑफिस में यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है बेटा ऑलराइट इलेक्ट्रोस्कोप के केसेस रहते हैं अभी हम
राइट आपको सिर्फ मैग्नेट का टेस्ट आएगा, इलेक्ट्रोस्कोप का नहीं, इसका नहीं आएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होती हम इसका टेस्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो जस्ट प्रिपेयर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक का अभी नहीं, we are unable to complete it, इसका कम से कम 8 लेसन और होते हैं। ओके चलो, ऑलराइट, tomorrow I'm going to give you the test for magnets only. Any questions please? All right, thank you very much. खुदा हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़ बख्तियार। Allah.